औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं साजिद अली खान, टीचर, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल दखन, जून शुमकोट, क्लस्टर ईपकोट। डेट 1 सितंबर 2020। क्लास 5th। सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक द कैट पैराडाइज। प्यारे बच्चों, ये जो सबक था हमने अच्छी तरह से पढ़ा। इसके चंद सवालात हैं वो आज हम करवाने जा रहे हैं। आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 76। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। शाबाश, निकालिए आप लोगों ने किताब। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लिखेंगे। व्हाट काइंड्स ऑफ लाइफ डिड द कैट लीड? किस किस्म की ज़िंदगी वो बिल्ली ने गुजारी? ही led a very secure and comfortable life। अब वो जो बिल्ली थी उसने आरामदेह ज़िंदगी गुजारी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है व्हाट डिड द कैट फील ए नीड टू लीव द कंफर्टेबल ऑफ द हाउस? तो अब हम इसका जवाब लिखेंगे। आंसर, ही वाज fascinated by the way the other cats roamed about freely in the ओपन, ठीक है ना। अब हमारे कितने क्वेश्चन मुकम्मल हो गए? शाबाश, 2। इन व्हाट वे लाइफ ऑन द टेल्स डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द हाउस? आंसर आएगा लाइफ on the tail was far more hard and insecure than that in the house. ठीक है ना, इन द हाउस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4। What advice did the tomcat give about meat on table? He said, answer. He said that the meat on table was not for
them. They had to eat. They had to eat from gutters and lanes. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ यहीं पे इख्तिताम हो रहा है। बाकी यहाँ से आगे ये 2 सवाल रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। बाकी बस।